Hello, my dear students. Good afternoon and welcome to Gradeup India's largest online education platform. I am Vinod Shankaran, and please join me for this session on close tests. Rakesh, beta, hi, how are you? And this is a very important session simply because इसको कैसे करते हैं? How do we go about doing the close test and the fill in the blanks? Now, both things are very important. Understand that close tests are very much akin to close tests are very much akin to close test वैसे ही होते हैं जैसे कि तुम्हारा ठीक है close test वैसा ही होता है close test वैसा ही होता है जैसे कि fill in the blanks होते हैं. Now fill in the blanks and close tests. What is a close test, sir? A close test is nothing but a series of fill in the blanks in a paragraph. A series of fill in the blanks in a paragraph. So slightly there is a slight concept difference when we talk about fill in the blanks and close tests, but then only slightly. ठीक है, पुष्पेश बेटा वेलकम है. तो क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स दोनों में जरा हल्का डिफरेंस है, इसीलिए कि भाई क्लोज टेस्ट में यू विल हैव मल्टीपल सेंटेंसेस व्हिच यू नीड टू फिल इन, एंड इन दिस वन in fill in the blanks you will have one or two sentences max where you need to fill in the blanks. So what are some of the skills we should have, sir? कुछ skills कौन से हमारे पास होने चाहिए, ठीक है? तो मैं बता रहा हूँ. देखो, सबसे पहले तो what is to be done is whether it is as a close test or it's a fill in the blanks, the first thing to do is to read करना पड़ेगा, ठीक है? Read the sentence or see what is the approach. The approach is pretty simple. Okay, how do we approach a close test or a fill in the blanks? Read the sentence, and in the case of a close test क्या होता है? एक पूरा पैराग्राफ होता है. तो read at least a few sentences. Okay, at least a few sentences. Don't try to read the entire paragraph and then try to solve close tests. वो नहीं होता. Close test में पूरा अगर पढ़ने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. So the best thing to do is we start with if it is only one sentence, fill in the blanks है एक sentence, so पूरा sentence पढ़ना है, ठीक है? और close test है तो कम से कम कुछ sentences पढ़ना है. Why is that required, sir? Why can't we focus on the blank and choose a word for the blank? See, the blank exists because there are other words, है ना? Blank तो तभी है जब दूसरे शब्द हैं, ठीक है? जब दूसरे ही शब्द के बारे में नहीं पढ़ूंगा, if I don't read the other words, suppose I say something like this: she dash whatever, dishonest or whatever. Okay, then if I leave this here, not okay, she dash not dishonest, and if I ask you what is to be written here, until unless you pay attention to the other words, you will not be able to fill in the word here. So simply a blank depends on other words to say that a particular kind of word is required. So read, understand the sentence and look for clues, because clues will be there in the other words which are surrounding the blank. Blank के आसपास में जितने भी words हैं वहां पर में जरूर clue या hint होगा. Clue होगा या hint होगा, मतलब तो जो शब्द हैं, माने some words will be pointing to the blank. You find those out, and then depending on that clue or hint, decide whether the blank has to be a negative blank, it has to be filled with a negative word, or a positive word, or a neutral word. A neutral word could be something like a preposition, an article, etc. Whether you require a negative word, a positive word, or a neutral word. And then once you have done this, if you are doing this, and if you have some idea of parts of speech, कौन से शब्द उस blank पे लगना है, noun लगना है, adjective लगना है, adverb लगना है, that also helps us. So knowing the suffixes of words, that also helps us in selecting the right word for the blank. Okay, so it's very important to read, understand, identify the clue, because whenever you tell me, sir, ye lagega, I think 2 is the answer, I think 3 is the answer, as soon as you tell me that, I'll be asking you a question. Vidika, how are you doing, beta? And Akash and Akriti, welcome. Okay, I'll be asking you, what made you think that such a word is, you're going to write such a word? ठीक है, ये बात मैं पूछता रहूंगा आपसे. So that you must keep in mind. Every time you read, understand, find the clue, only then decide what kind of word is to be written in the blank. So let's come to the
questions. Before that, let me tell you, if you are preparing for any BBA or hotel management entrance exams, you can go for the subscription now. You have got expert faculties on Gradeup, okay, for IPMATs, SCT, and DUJAT and everything, okay, 55% off. Now, at this juncture, you can actually avail of a 55% discount on Gradeup Super subscription. Now, to the first question. Now, you see, even during that cold winter, okay, now I'll not show you the options before. See the voice or narration. Of course, voice and narration, Pushpesh. If it is voice, the verbs are going to differ. The words are going to differ. Okay, how well you are going to write the word. When I said grammar, everything is included. Okay, but then mostly it is all parts of speech, because when I give you a blank has to be filled by one word. So it is most likely a part of speech, a verb, an adjective, an adverb, like that. Okay, so now, I'm not showing you the options. Tell me what kind of word are we looking for in this blank. Okay, this is called shadowing the word. Without looking at the options, making up your mind or deciding that such a word must come here. And then we can look into the options, and then we can see whether those words match or you find a similar word. Okay, and what do you think? Pushpesh says slow. Okay, even during that cold winter afternoon, the postman was slowly pushing his bicycle up the hill that led out to the village. He used to walk very dash because there was a lot of ice on the ground. Okay, he used to walk very dash. Okay, now he says slow. What do you think, Geetika and Akshay? Akriti, what do you all think? And Rakesh, what do you all think? What kind of word is required? He says slow. Okay, is it a good word or something like slow? We will be writing slowly, mind you, Pushpesh. Okay, we are talking about the action verb. Therefore, if you write a word to qualify the verb, it must be an adverb. Okay, so very slowly kind of word, slow kind of word. Okay, so let me show you the option. Now. Okay, now briskly, slowly, fast and leisurely. Okay, you see, third is old, fourth is bottom, well, fifth is called, very good. Now you see, Pushpesh, you have gone on to guess all the words in that cloze test. That is a very good thing to do, because it is called shadowing the word. Okay, before coming to the word, thinking what kind of word is going to get into the blank, because if you are doing that, you are looking at the sense of the sentence. You are trying to understand the sentence. In which case, you are also looking at the clue or hint, whatever. Okay, so the answer is slowly. Okay, what is briskly? Walking in a tight, energetic way, in an energetic and active manner is briskly. Leisurely is in a very laid back fashion. But then he is not laid back. He is walking slowly because he is cautious. Okay, so the best word is slowly. Okay, now to the second one. Okay, here the answer is B. Okay, now to the second one. Let's come to the second one. There was a lot of ice on the ground. He had only one letter to dash. He had one letter to. What do we do with letters? What do we do with letters? Leisurely, I told you, lazily. Leisure, aram se karna, comfortably. Okay. Now, what do you think is the second word? Second Pushpesh you did not write. If he has got a letter, then you can read. Okay, he's a postman. It seems he's a postman. So he used to walk very slowly because there was a lot of ice on the ground. He had only one letter to dash. A postman does what? He takes a letter and does what? He had only one letter to post or give. See, a postman doesn't post. He takes it and gives it to you. So what is you are looking for a word like give. So let me show you that word, and you will laugh. You would say, sir, I have already guessed it. I already know the word. Okay. Now look at this. Look at this. Okay. The options here. Now, post, handover, deliver, give. Now, the options are very close. Which one are we going to write? Okay. Is it post, handover, deliver? Because when you read further, you see a lot of other information also. He's going to give it to a woman.
He is going to give it to an old woman. Okay. So in which case, what would he say? Post, handover, deliver. What does a postman do? Handover करता है. Handover is giving a responsibility. Handover is giving a responsibility. It is deliver. A postman delivers letters. Easy to tha. That is the co-location. How do we write? चिट्ठी को क्या करता हूँ? अगर मैं करता हूँ तो if I put it in the box, I am posting it. And the postman actually goes and delivers it. So the answer must be deliver. Handing over is giving the responsibility to somebody. Deliver is to go and give it to somebody. But then we don't use, for post and all, we say we deliver. Okay, supurd karna. Okay, now to the next one. Okay, to the third question now. See, he had only one letter to deliver. This was for an dashed lady. Kaisa lady hona chahiye? Is my voice very low? Is it okay now? Pushpesh? Is it okay now? Let me check. Is there a problem with the... No, I was not raising my voice. So, I have raised my voice now. Okay, now tell me. Yes, now tell me what do you think is going to be the best word for the third one? This was for a dashed lady who lived at the dash of the hill. Old lady. So this must be an old lady because you see grandmother is written in the next one. So what I'm saying is if you don't get the clue, मान लो तुमको clue नहीं मिल रहा है. Sir, I'm reading this sentence, but I'm not getting the clue. You go ahead and read furthermore. You read till the time you don't get clue. But then it's not necessary to fill the first blank, then come to the second blank. Suppose you are not getting enough information for the first blank. पहला blank के लिए तुमको information नहीं मिल रहा. मैं पहले second वाले को भर दूंगा, उसके बाद third वाले को भर दूंगा, और fourth पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आ रहा है कि सर first के लिए मेरे को content मिल गया. Then I'll put then I'll go and put the first question, this one, fill the first blank. It is not necessary to go serial wise, 1, 2, 3, 4. No. We can fill the words as they come. ठीक है, ये चीज याद रखना. ठीक है, ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है. Okay, now, so old lady. Okay, this she had only one letter to deliver. This was for an old lady who lived at the dash of the hill. Now, why would he be walking slowly and pushing his bicycle up the hill when the lady is living at the bottom? Pushpesh, Pushpesh. How do you say? See. He is pushing his bicycle up. He is pushing his bicycle up. When you are pushing your bicycle up, why should the old woman, and he was going to deliver the letter to the old lady. So why do you think think. Okay, there is always clue in the, this one, in the closed tests. Okay, so you need to be careful. You need to be careful. So here, we said this was for an old lady. This was for an old lady. Silly, yes. Who lived at the top of the hill? Who lived at the top of the hill? See, it cannot be bottom for sure. It can be anything else. Okay. So let us check the words. Top of the hill. Very good. So let us check the words and see. See, here, ancient. Okay, it was old. Okay, now then this was old, and the fourth one. Okay, fourth one is top is given. Top is given. So for fourth, it is top of the hill. Now let's come to the fifth one and let us guess. Everyone dash her grandmother. Now this is very easy. Everyone dash her grandmother. What do you think? Everyone dash her grandmother. That's a very easy one. And I think you got it right also. Called her. Everyone called her grandmother. Okay? Everyone called her grandmother. Now let us check the words. You will see them. Yeah, see, called. Everyone called her. That's why I'm telling you, first of all, decide the word in your mind and then go for the word, rather than looking at the options and then thinking. Because as soon as you think about the options, you will be focusing more here and less on the sentence. And then all these things will start bothering you. Sir, named kyun nahi likha? Named her kyun nahi likha? Seems to be a good word. See, grammar is okay. The sense won't be correct. So the best thing to do is read the passage, look for a word, उसके लिए word guess करके उसके बाद देखना हमेशा ही फायदेमंद होता है. Now let's come to the next one.
Okay, and let me again emphasize that घर से तैयारी कर रहे हो तो you can avail of a 50%, 55% discount when you go for Gradeup Super. Now to this one, sixth वाला देखो. She had lived alone dash since her daughter had emigrated dash Australia many years dash. So why did you read the entire sentence? Because it's a long sentence. Because it's a long sentence, I read the entire sentence. I'm not in a hurry. Fifth is left. Okay. Everyone left her? No, not at all. Akriti. Left तो आ ही नहीं सकता था पांचों में. ठीक है. She had lived alone dash. अच्छा, सेवेंथ के लिए तुम बोल रहे हो, फिफ्थ लिख दिया तुमने. Okay. She had lived alone dash since her daughter had emigrated dash Australia many years dash. Okay. पहले वाला में क्या होना चाहिए? एनसीएचएम इसका वेरी इजी फॉर्म पूछता है. ये तो इजी है. दिस इज इजी. इससे ज्यादा इजी क्या चाहिए? पुष्पेश, इतने ही आता है, इतना ही इजी आता है. हाँ, चले आज ऐसा बताना, इवन या एवर क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए या एवर होना चाहिए? शी हैड लिव्ड अलोन डैश सिंस क्या होना चाहिए? इवन सिंस और एवर सिंस क्या बोलते हैं? शी हैड लिव्ड अलोन एवर सिंस, उस समय से लेकर अब तक. एवर सिंस का मतलब जब से वो गई है, जब से वो उसकी बेटी गई है. सिंस हर डॉटर हैड इमिग्रेटेड डैश ऑस्ट्रेलिया मेनी इयर्स डैश. यहां क्या लिखना पड़ेगा? यहां पर मैं एवर सिंस. वेरी गुड. सो हैड इमिग्रेटेड, had lived alone ever since her daughter had emigrated. सेवेंथ के लिए क्या आना चाहिए बताना? इवन सिंस का मीनिंग ही नहीं बनेगा पुष्पेश. इवन का मतलब क्या है? फिर भी इवन देन, उसके बाद भी. उसके इवन का मतलब उसके बाद भी, काम ही नहीं करेगा. ठीक है. Had emigrated के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लिखना है? वेरी गुड पुष्पेश, दैट वाज अ गुड गेस कि सर इसमें टू ऑस्ट्रेलिया. वेरी गुड. एमिग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया, याद रखना. जब एमिग्रेट करते हैं तो प्रीपोजिशन कौन सा यूज करना है? कल भी बताया था तुमको मैंने. एमिग्रेट के साथ वी राइट टू. एमिग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया मेनी इयर्स. मेनी इयर्स क्या होना चाहिए बताना? एमिग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया मेनी इयर्स, इसका आंसर है टू. एमिग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया मेनी इयर्स क्या होना चाहिए? कई सालों पहले. ओके. व्हाट कुड बी दी ऑप्शन देयर? बताना जरा, देखता हूं कितने लोग बता रहे. सेवेंथ तो टू हो गया. एट्थ में बताना. मेनी इयर्स 8 में अगो चाहिए. देखो, वेरी गुड पुष्पेश. गीतिका वेरी गुड. 8 में अगो चाहिए. देखते हैं है कि नहीं. देखना, देखो अगो या बिफोर कुछ न, अगो होना चाहिए. या तो उसका बराबरी करने वाला कौन सा है? अगो के जैसा कौन सा वर्ड है? वो है बिफोर. हो गया. ठीक है. 8 years बिफोर. ठीक है. Now let's come to the ninth one. Many years ago, she dash used to invite the postman for a cup of tea. Dash he read her letters. इसमें क्या होना चाहिए? She dash used to invite the postman for a cup of tea. Dash he read her letters. यहाँ क्या होना चाहिए? Usually. Very good. That is you are looking for an adverb. यूजुअली बोल रहा है पुष्पेश. बाकी सब बताना बेटा. पुष्पेश का कहना है यूजुअली. ठीक है. शी यूजुअली यूज्ड टू का मतलब ही यूजुअली हो गया. किया करती थी, हैबिट था. ठीक है. तो क्या होना चाहिए? आई विल शो यू द वर्ड्स. नाउ यू चेक. शी ऑलवेज, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली. क्या होना चाहिए? ठीक है. क्योंकि हमेशा चिट्ठी पढ़वाती थी. सेंटेंस को पढ़ने पर क्या लग रहा है कि हमेशा चिट्ठी पढ़वाती थी. तो हमेशा अगर चिट्ठी पढ़वाती थी देन ऑलवेज होना चाहिए. ऑलवेज होना चाहिए. कभी कभी का होता तो ओकेजनली होना चाहिए.
ठीक है, लेकिन कभी कभी के जैसे लग नहीं रहा, रेयरली बहुत कम बुलाती थी, लेकिन तब बोल रहा है कि वो पढ़ती थी, मैंने वो पढ़ता था किताब, मैंने वो अपने चिट्ठी पढ़ के सुनाता था। सो रेयरली नहीं हो सकता, ऑकेजनली नहीं हो सकता, तो फ्रीक्वेंटली भी नहीं हो सकता, तो आंसर तो ऑलवेज ही होना चाहिए सर। वेरी गुड, ऑलवेज ही आंसर होना चाहिए, वेरी नाइस, ऑलवेज। फ्रीक्वेंटली से भी जब, क्योंकि उसमें लगे कैसे रहा आकृति, नीचे पढ़ना उसमें, सी read the next sentence, you will understand. She always used to invite the postman for a cup of tea. Why? ठीक है, यहाँ देखना, he read her letters, मतलब वो पढ़ के सुनाता था, तो हमेशा ही बुलाना पड़ेगा वहीं से। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सेंटेंस में जब डाउट हो जाए, जब मान लो यहाँ पर में क्या आ जाएगा, डाउट होगा, तो रीड द सेंटेंस फर्दर, नीचे पढ़ो, ऊपर पढ़ो, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, 10th में क्या आना चाहिए बताना, 10th वाले में क्या आना चाहिए? Always used to invite the postman for a cup of tea, dash, he read her letters. जब वो चिट्ठी उनके लिए पढ़ के सुनाता था, जब वो वृद्ध महिला को पढ़ के सुनाता था, तो क्या लिखना चाहिए बताना। ठीक है, मैं दिखाई देता हूँ, रुको, अब बताओ, ये 10th का ये क्या लिखना पड़ेगा इसमें बताना। ऑप्शन तो दिखा, बिकॉज तो सही नहीं काम करेगा पुष्पेश। जबकि जब चाय के लिए बुलाती थी, और चाय पीते 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 के दौरान, पीने के दौरान व्हेन टाइप का वर्ड चाहिए। वेरी गुड, व्हेन टाइप का वर्ड चाहिए। तो व्हेन टाइप का वर्ड कौन सा है, ए और डी? डी तो नहीं होगा। व्हेन ही रेड हर लेटर्स, वाइल, व्हेन के जैसा कौन सा वर्ड है, वाइल। इसीलिए मैं बोलता हूं ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस, डोंट बी, पुष्पेश बेटा तुक्का मत मारना, सेंटेंस को दिमाग में रखते हुए। ठीक है, सो द आंसर इज वाइल, क्योंकि इसमें ना बहुत तुम्हारे पास क्लूज होते हैं, और जरा से हिंदी समझने की कोशिश करो कि अच्छा हिंदी में क्या बोलेंगे, तो तुरंत तुरंत वर्ड समझ में आ जाता है। वेरी नाइसली डन, वेरी गुड। सो लेट्स ट्राई वन मोर। ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर। कैन यू शो द क्वेश्चन वंस अगेन? यहां देखना बेटा, she always used to invite the postman for a cup of tea, dash he read her letters। तो यहां पर हम लोग when सोच सकते थे, while सोच सकते थे, ऐसे ही कुछ before he read her letters, इस तरीके से कुछ होना चाहिए था। तो 8 लेवल में देख लो, गेस करके उसके बाद जाना। गेसिंग जो करते हैं उसको we say that we are shadowing the blank, we are shadowing the blank, that is we are trying to run after the blank, we're trying to find out which word would be a fit, and then you go and see the options. You will never miss, you will always get the right answer. Okay, that's the best way to do it. ठीक है, अच्छा इसमें आ जाओ। It seems again the options are given here itself, so we can actually see the options also. It seems there was no marina beach during the 1700s. The dash developed only after the construction dash the Madras Harbour in the dash 20th century. ठीक है, पूरा सेंटेंस पढ़ लिया ताकि मेरे को वो क्लियर हो जाए। ओके, इट सीम्स देयर वाज नो मरीना बीच ड्यूरिंग द 1700s। द डैश, द बीच लिखूं या शोर लिखूं? बीच लिखूं या शोर लिखूं? देयर आर टू वर्ड्स, गुड वर्ड्स, बट देन यू गेस्ड राइट कि सर यहां पर मैं बीच भी आ सकता है, शोर भी आ सकता है, कोस्ट भी तो आ सकता है। ठीक है, तो कौन सा होना चाहिए जरा से गेस करना। इट वॉज डेवलप्ड एज अ, ठीक है, क्या लिखेंगे? बीच ही लिखेंगे। वेरी नाइस, बिकॉज द वर्ड इज ऑलरेडी रिटन सर, यहां तो वर्ड ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। देयर वाज नो मरीना बीच ड्यूरिंग द 1700s। बीच तो डेवलप्ड है, ठीक है, डेवलप भी किया जा सकता है। सो कोस्ट तो पूरे लाइन को ही कोस्ट लाइन बोलते हैं। मरीना बीच इज वन दिस वन। कोस्ट एंड शोर मीन द सेम, इट्स अ लॉन्ग बेल्ट, बीच ही होना चाहिए। वेरी गुड, देयरफॉर the marina the beach was developed or developed only after the construction dash। यहाँ क्या होना चाहिए सेकंड वाले में? सेकंड वाले में क्या होना चाहिए? construction dash the Madras Harbour in the dash 20th century, in the dash century। Okay, which one?
1 का C, ये 12th नहीं, 2 का बताना। कंस्ट्रक्शन, very good. Construction of, very good. The construction of the Madras Harbour in the dash century. Madras Harbour in the dash century. Okay. Construction of, यहाँ पर मैं तो ये हो गया, the construction of the Madras Harbour in the dash century. ठीक है। अब ये दिक्कत क्या है, in the late century possible 1700 के बाद में, ड्यूरिंग द 1700s, ठीक है। तो ये किस सेंचुरी में हुआ, वी विल नॉट बी एबल टू नो। सो लेट्स सी वेदर इट्स अ से जीके क्वेश्चन और लास्ट सेंचुरी क्या लिखा है देखते हैं। ओके, नाउ हियर्स यू टेल मी, 1700s में नहीं था तो किस में होना चाहिए? ओके, 10th नहीं हो सकता, क्योंकि 1700 में नहीं था तो 10th में नहीं होगा, 15th में नहीं होगा, 16th में नहीं होगा। तब तो मेरे पास एक ही वर्ड है सर, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी गिवन द क्लू एज 1700, उसके बाद का ही होना चाहिए। देयर वाज नो मरीना बीच, ठीक है। तो 19th सेंचुरी ही होगा, डेवलप्ड ओनली आफ्टर द इन द 19th सेंचुरी, क्योंकि भाई 1700 17 अब 18th सेंचुरी की बात कर ली, 18th सेंचुरी की बात कर ली तो 19th सेंचुरी होगा, ठीक है। अच्छा, सो इन द 19th सेंचुरी it should be remembered dash any kind of developmental activity dash the coast will have an impact on the adjoining areas. Okay, which one do you think? इसमें बताना बेटा, very nice। अगले वाले का गेस करना, in the 19th century। नेक्स्ट वाला गेस करना, it should be remembered dash any kind of developmental activity। क्या होना चाहिए बताना उसमें, इस वाले में क्या होना चाहिए जरा से सोचो, that होना चाहिए, very good। इसमें क्या होगा, दैट होना चाहिए, ठीक है। सो लेट अस चेक कि दैट है कि नहीं, इसमें दैट है सर। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटी डैश द कोस्ट लाइन विल हैव एन इंपैक्ट ऑन द एडजॉइनिंग एरियाज। जो भी 5th में क्या होना चाहिए, डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो भी इसके किनारे होगा, इसके किनारे होगा, ठीक है। बताना 5th में क्या होगा, जो भी इसके किनारे में होगा, ठीक है, जो कोस्ट लाइन में होगा, दैट विल हैव एन इंपैक्ट ऑन द एडजॉइनिंग एरियाज। व्हाट इज द प्रीपोजिशन वी नीड ऑन, वेरी गुड पुष्पेश, बट देन वी आर लुकिंग फॉर अ प्रीपोजिशन। वो क्लियर हुआ, मैं दिखाऊं, जरा ऑप्शन दिखाऊं, अब बताना कौन सा है। सर ऑन तो नहीं है, तब क्या करना पड़ेगा, ऑन तो नहीं है, then what do we write? साथ साथ में चलने को क्या बोलते हैं, what is the preposition we use? साथ साथ में, रोड के साथ साथ चलना, on the coast सोच सकता था, ठीक है, लेकिन कोस्ट के साथ साथ जो चलता है उस जगह पे डेवलपमेंट। वेरी गुड, द आंसर इज along, वेरी गुड, along the coast। okay, we are looking for the answer along the coast, very good। along the coast का मतलब साथ साथ में चलना, will have an impact on the adjoining areas। हो गया, ओके। तो दिस इज हाउ वी गो अबाउट, how we go about doing cloze tests। okay, cloze tests are pretty easy। okay, as soon as we understand how to go about cloze test करना तो बहुत आसान है, only if you know you are looking for clues along the way। okay, now घर से तैयारी करो, 55% का ऑफ है, you can avail of this discount for on Gradeup subscription today। okay, buy now। okay, then you can also join the IPM IIM booster crash course, enrollments are on, and for any queries on courses you can call these numbers, and for any course related query or any query on WhatsApp, this is the number to use। okay, please do subscribe to our YouTube channel, like and share। एक क्वेश्चन और प्लीज, ठीक है बेटा, इतना ही क्वेश्चन है। एक्चुअली आई हैव गॉट अनदर क्लास कमिंग अप, so we'll do more, don't worry, we'll do more। okay बेटा, see you, bye bye।